एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंक्विजिटिव कुक। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। दैट इज ओट्स चिला विद कोरिएंडर चटनी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। ओट्स चिला के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक बाउल ड्राई रोस्ट किया हुआ ओट्स, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 फाइनली चॉप्ड टोमेटो, 1 tablespoon ginger garlic paste, green chili, 1/4 cup of curd, a few coriander leaves, 2 tablespoons suji and 1 cup of water. एक मिक्सिंग जार लेंगे एंड ड्राई रोस्ट किए हुए ओट्स को उसमें डालकर एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हमें लेना है एक लार्ज मिक्सिंग बाउल। उसमें हम डाल देंगे ओट्स पाउडर, 2 टेबलस्पून सूजी, 1/4 कप कर्ड, 1 finely chopped onion, 1 finely chopped tomato, 1 tablespoon ginger garlic paste and green chilies. चिले का बैटर बनाने के लिए हम 1 कप पानी लेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम पानी को ऐड करेंगे एंड उससे एक स्मूथ बैटर हमें रेडी करना है। बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, a few coriander leaves and mix everything well in the batter. Take a pan, keep your gas on the low flame. एक लेडल बैटर हमें पैन में डालना है और स्प्रेड कर देना है। Now cover the pan for a minute or 2. After 2 minutes, we will turn it and cook from other side. एक मिनट बाद हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेंगे। एज यू कैन सी, चिला हमारा दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा सॉफ्ट एंड हेल्दी चिला रेडी है। नाउ लेट्स क्विकली मेक कोरिएंडर चटनी। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स, एक कटा हुआ टमाटर, 2 टेबलस्पून कर्ड, सॉल्ट एज पर टेस्ट, एक कटा हुआ अनियन, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 4 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक, एक छोटा अदरक का टुकड़ा एंड 2 हरी मिर्च। हम लेंगे एक मिक्सिंग जार, उसमें हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, कटा हुआ टमाटर, काटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, 4 cloves of garlic, cumin seeds, salt as per taste, 2 tablespoon curd. We will cover it up and blend it to a smooth paste. The coriander chutney is ready to serve and it will best complement our oats chilla.
thank you for watching, guys. Happy cooking. If you like the video, press the like button, give your comments in comment section, hit the bell icon and don't forget to subscribe to my channel.